नोटिफिकेशन आ गई है. लेट मी चेक वॉइस एंड ऑल. ओके. नोटिफिकेशन आ गई है. लेट मी चेक वॉइस एंड ऑल. ओके. Incredible voice. Let's go. Day in, day out. It doesn't matter if I'm sick. It doesn't matter if I'm down. It doesn't matter what happens with me. And it all doesn't make a difference what my mood is. You gotta understand something. It ain't just a catchphrase. I'm easily top 2 and I ain't number 2. Yeah, copied line, but it's okay. So 31 days lead coding, coming every day and showing up and doing a problem. Takes a lot of effort. There were days when I was sick. There were days when I was very down. I still showed up. Right now I'm on 61 problems, but this is not just a 61 problem thing. This is, I came even when I didn't want to come. 18 medium problems, 43 easy. Started with all easy mostly, then eventually did a lot of medium problems. Let's just observe together how did this series went. Okay, my YouTube is just shown. Where do I put my face? Here. Let's just, before doing the question, let's just react what exactly happened and what streams do I remember. So it all started here, I guess. A date with C++, where I decided to switch my language from Python to C++. And in this stream right here, look at this, okay? Wait. What just happened in this stream? Oh yeah. Something happened and I quit the stream. मेरा स्ट्रीम ओवर करने का समय आ गया. And then there is this Leetcoding another day with C++. Like, because Python has membership operator, question like these are just. Then I did threesome stream in my college. I did the stream in college. Sitting on the last bench and doing the question. Damn. Then there is surviving day 6. I was already tired, but I did some questions. Just 4 more. It was just 4 more for almost 10 days. Then figuring out strings. I did like strings and all. Then there is this day 9, day 10, day 11, day 12. Then sick. I was sick, but I still did. Then day 18. And I did this stream where I tried to learn full stack development in one go. I failed, but I did one question here too. Day 20, day 22. Wait, one day is missing. Maybe I didn't add it in the playlist. Let's just add it in the playlist, okay? Day 21. Okay. Yeah, there it is, day 21. Save to playlist, live streams, and then there is this thing. AK code a lot. And let's just figure out this playlist again. Yeah, so day 21, day 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, and today is the last day where I beat this challenge. And I was thinking, what problem should I attempt? What problem should I attempt? Hmm. I just discovered that people in my college are incredible. No matter how much I push in DS, I'm still very behind everyone. Far behind everyone. Many of these things, I'll tell you what I know: array, string, hash table, linked list, two pointers. These are the only things that I know. Should I do stack? Something medium in stack. Well, stack does require hash maps a lot of times, so that's why it's hard to do. Oh, there is this one question. Remove all the elements present in a link array. Where is that question? Mm, remove nodes from linked list. No, this is not the one. Remove nodes from linked list present in array was the question. Where is that question, man? Is this the one? Where did that question disappear? Yeah, there it is. This is the question I was talking about. So while head I can easily do this one in Python, by the way. Let's try once, just once. Okay, now here it is. Head dot next. Now I land here. Right? So what do I do at this point? Let's just think about it. Head is equal to head dot next. What else?
Oh, I have paper. I can do it on this one too. Let me just think about it for a second. So here it is, the linked list. These are in the array. This is not. Then this is in the array. If the last node is in the array, it is a problem. This one is for sure not. So cur is equal to head. This one is for sure not in the array. That's why it stops here. While cur not equal to none and cur dot next is not equal to none. Let's think about it again. Let's think about it again. It's all okay, I guess. Right? It's all okay. So if cur dot next dot val, and again I'm using C++ syntax in Python, biggest problem of mine, in nums let's just do while cur dot next is equal to cur dot next dot nums. Cur dot next is equal to cur dot next dot next. Incredible, I guess it is. And at last it will check again. If it is, then again it will do the same thing. Yeah, so at last cur is equal to cur dot next and return head. If this works, I am incredible. And it won't work. Oh, what it worked. I have C++ now. Oh, but it is hard to do in C++ because C++ don't have membership operator. But it worked. It really worked, man. So okay, damn, bro. But how do I implement this in C++? This is the problem, man. Oh my god, why don't C++ have membership operator? Why? Nah, bro. Wait. Will it also... I'm submitting this, but I will do this question in C++. I have to. Oh. Still have a problem, I guess. Cur dot next and cur dot next is not equal to none. Yeah. Okay, it should come here, I guess, right? X.
By who is the second person watching me? You look like a ghost. Comment, at least comment something, bro. Will it work? Only 18 test cases passed, by the way. I don't think it's working. I might get a TLE, by the way. TLE, runtime error. TLE. But there is no problem actually. You know why? It gets TLE in Python. But if I can implement the same method in C++, it won't and it can't give me TLE. I just have to implement this in C++ and that's it, man. Where is C++? Come on, bro. We gotta do this thing, man. We gotta do this thing. We gotta do it, bro. So head dot next until it exists in nouns. Okay. How do I stop? Damn, bro. Why there is no? I should search about it, I guess, right? Is there a membership operator in C++? In C++. Only if C++ had membership operator. This would have been so easy. So easy, man. Nah, bro, not this one. Like Python. Anybody membership not not in. Yeah, I want the C++ equivalent. Why is there a video? Video just popped up. What the hell is this? Yeah, I want something like the solution 1. Letter to be first element is found equal to. Think about it, bro. Think about it. Is there any algorithm that you can develop to do this? A, K, D, W, G, do this shit, man. Let's think about it. How can I develop a membership operator, man? Please, AK, please think about it, bro. Think about it. How can you do this thing?
So I'll have this bool b is equal to true. Okay, while b is equal to true, think about it. I have to develop something like this. If head val is equal to for int I is equal to 0, I less than nums dot size I plus plus if nums of I is equal to head val. If this happens, head is equal to head next. Okay, but here is the problem. Here comes the problem. What if the element is not found? Is the problem. If this happens, then just break. This for loop is broken. Then we do it for the next head. Then we do it for the next head. There's this one thing called for else, right? Is for else in C++2. Can I use for else for C++? There is no such thing called else loop. Test book again. Nah, man. C++, the last day, and I realize what is the problem with C++. Just to develop a membership operator. Hi Kanishk Vishesh, what up? Damn, there's nothing called for else. Python is legendary, man. C++ is not good. Wait, if this while loop is done, I can always do b is equal to, wait, actually it is not that bad. I just have to do b is equal to false now. B is equal to false, and this will run. This will become a something like a membership thing. Now list node star is equal to cur head
So while cur is not equal to none, null pointer actually, null pointer, and cur dot next is not equal to null pointer, close the bracket, new curly bracket, place it right here, or maybe just this is good, I guess. Now take this one, x, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, paste it here. Now there is while is not equal to null pointer, and then I have to write this code again. Wow, wow, a single membership operator is this much incredible. Never thought about it. क्या कर रहा हूँ यार. What if I just write, yeah, what if I just write a function for in nums? Wait, how to write a function in C++ in Leetcode? Wait, man, I have to ask this thing. Wait. So here it is. How can I make a function in C++ Leetcode and then call it in my main code? This is the function that I want to make, right? Yeah, this is the function that I want to make right now. Since you're aiming to be, this is an essential good habit. Nah. You define the helper function. Oh. So it says I can just create a void function. Oh, obviously it won't be a void function.
Wait, let me think about it. I don't need this bullshit. I'm sorry, I swear, but don't worry. Have the logic here. Clean it up. Bool in. Let's just define in. Int val, not val, data, and then there will be vector int v. Now what happens here is, as I did, b should be, no, there is just no problem in this, I guess. For int, I is equal to 0, I is less than nums dot size I plus 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 I'm sorry, if val, not val, data is equal to nums of I, return what? Return true, right? Return true. If it doesn't happen, we just do this, that just return false. And now I can become incredible, because I just have to copy this and I just have to write the C++ equivalent for this, because now I have what? I have membership operator, my own defined, my membership operator. Yeah, so while head not equal to null pointer and head and in head val and nums is equal to true, the function works, right? Now what I do is x 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 v, here it is, list node star cur is equal to head. Now just change all the none with null pointers. I will be very proud about this answer if I do it. Null pointer. So close.
What am I doing, bro? What the hell am I doing? Nah. Just remove this thing. Just go, man. So, cur next is equal to cur next. What the hell? Cur's next. List node cur's next. Yeah. Yeah. Let's just leave some gaps between. Now there is nothing called dot next. C++, it looks like this. I think everything's very fine right now. Then there is this last thing that is cur is equal to cur next. One more thing is equal to true. At last, just return head, and now pray to God that this solution is correct. Oh please, almighty, please, I have been doing add to number. Something is wrong. But what is that thing? Nums dot size. I've been doing add to some, bro. Just press tab. Why do you use space bar? I don't know. Oh, okay, because there is no nums dot size. There is this thing called v dot size. Head dot next. It is giving me anxiety. I just don't want the logic to be incorrect. What? Okay. It worked. It worked. I don't want to see a TLE. Please. Please, I'm so close. TLE. No. TLE. नहीं यार. I did everything. But कितना लंबा है ये टेस्ट केस यार? It doesn't end. Really? Damn. Damn. Damn, bro. ओ भाई. ओ भाई. ओ भाई. Oh shit. Oh, I'm done, man. Oh damn, bro.
Oh, I'm done. Ah. Bhai, I tried TLE on only like 10 test cases. सर्किट लग रहा है. सर्किट कौन था? मुन्ना भाई MBBS में. वेट, सर्किट मुन्ना भाई. ओ ओ डैम. अच्छा, सर्किट लग रहा हूँ मुन्ना भाई MBBS का. अरे यार क्या बोल दिया ये. क्या करूँ अब मैं. फाइंड पीक एलिमेंट. देखने से तो बहुत आसान लग रहा है. होगा एक अलग ही लेवल की चीज़ होगी, अलग ही लेवल की. देखा ये माइनस इन्फिनिटी क्या क्या दिख रहा थी. इज द पीक एलिमेंट index of 2. 5 is the peak element. Your function can return either number 1 where the peak element is 2 or index 5. No, 1 2 3 4 5. Peak element is 2. Number 5 where the peak element is 1. Strictly greater than its neighbors. Given a 0th index. Wait, what? Show the audience. Okay. Circuit मुन्ना भाई MBBS. सही में, सही में, सही में. What? What? सही में. I wonder. Actually, अब मुझे सच में लग भी रहा है. हटाओ भाई, मैं लीड कोड से मर रहा हूँ. मैं क्या मजाक कर रहा हूँ ये. तो लूप चलना चाहिए फॉर आई. और कह रहे log n में तुम्हारी एल्गोरिथम चलनी चाहिए. ओ 2 to the power 31 log n में ही चलनी चाहिए भाई. पागल हो जाऊंगा मैं. log n में नहीं चलाऊंगा तो. और log n में अब कैसे चलेगी मुझे समझ नहीं आ रहा. क्यों यार, मैं क्यों फंसता हूँ.
1 से लेके आई लेस देन नम्स डॉट, सही कर लेते हैं एक बार, ओवन में भी चला लेते हैं, देख लेंगे क्या होगा। वैसे ओवन में नहीं चलेगी, एक्सपोनेंशियल है लिटरली वो। 2 की पावर 64, भाई सब पागल हो जाएगा मेरा कंप्यूटर ये करते हुए। आई प्लस प्लस इफ nums of I is greater than nums of I minus 1 and nums of I is greater than nums of I plus 1, return I. If nothing happens, return -1। और ये वैसे तो चल जाएगा, लेकिन ये टीएल देगा, बहुत आराम से टीएल देगा ये। टीएल मैं रेडी बैठा हूँ टीएल के लिए, 1% फ़र्क नहीं पड़ता, इतना ज़्यादा अपना ऐसी तैसी करवा ले। वाह, अच्छा एक्सपेक्टेड 0 है, अच्छा मैं इतना अपना 73 टच के सीधा भी आएगा, एक टीएल आएगा अभी यहाँ पे, आएगा अभी एक टीएल आएगा यहाँ पे। मैं अभी इतना बुरी तरह से मरा हूँ ना, पाइथन और सी प्लस दोनों में टीएल मिला मुझे, तो अभी मुझे इस सबसे तो फ़र्क भी नहीं पड़ता। अभी आएगा वो एक टेस्ट केस रह जाएगा। व्हाट, रिटर्न व्हाट, मैक्स ऑफ नम्स। मैं अपना एक्सेप्टेंस रेट इतना गंदा करा रहा हूँ ना ये सब करके, एक के बाद एक गलती कर रहा हूँ। और फिर मैक्स नम्स डॉट मैक्स ना, नम्स डॉट मैक्स। MTRA नहीं दे रहे हैं मेरे ख्याल से, बस MTRA ना दें तब सब सही है। व्हाट, मैक्स एलिमेंट, यार मजाक से हटके। इतना गुस्सा चढ़ता है ना C++ पे कभी कभी। अभी टीएलई के लिए कर रहा हूँ मैं सब, 72nd केस पे जो टीएलई आएगा, 73rd केस पे जो टीएलई आएगा ना, उसके लिए कर रहा हूँ मैं ये सब। व्हाट भाई, कैसे करते हैं इसे करते कैसे हैं? मिनट लगाने के बाद रन टाइम एरर, करते कैसे हैं? हाउ टू, वी डॉट बिगिन से वी डॉट एंड। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। nums डॉट बिगिन से nums डॉट एंड तक टीएलई के लिए कर रहा हूँ ऐसा। वैसे अभी देखना है 72nd केस पे जो टीएलई आएगा ना, जो मेरी जान खाएगा। अब क्या क्या भाई, क्या वो भी उड़ गया, बताओ। माइनक्राफ्ट क्यों बता रहा है पागल? पाइथन का कुछ भी मांगो ना, सीधा सीधा बंदा सीधा सीधा मुझे देता है कि क्या करना है। एक कमांड मांग रहा हूँ, एक कमांड सीखनी है। एसटीडी लगा रखे हैं, दिमाग खराब।
परेशान मत करना अब। मैं टीएल ही देखना चाह रहा हूँ 62 72 पे, वो भी नहीं देखने दे रहे। परेशान हो गया भाई आज तो यार। सोचा था बढ़िया से मीडियम पोर्शन ख़त्म करके सीरीज़ ख़त्म करूँगा, दिमाग ख़राब कर दिया इसने मेरा आज। अभी इसके बाद मुझे अपने क्लास टेस्ट का पढ़ना है, डिस्क्रीट का क्लास टेस्ट होने वाला है मेरा, वो पढ़ना है मुझे। एक के बाद एक एरर आ रहे, एक के बाद एक। इतना गंदा दिन है ना आज तो। टाइम लिमिट एक्सीड। अरे यार आंसर इज इक्वल टू आई होगा ना, क्या पागलपंती कर रहा हूँ आज। ख़त्म हो गया हूँ भाई, वो वाले क्वेश्चन ने मुझे ख़त्म कर दिया। मेरे को सही में लगा था वो मेरे से हो जाएगा। रोने वाली हालत हो रही है मेरी ना। अभी देखना, अब 72 पे टीएलई देखने के लिए तो आया था मैं। इतनी मेहनत मैंने 72 पे टीएलई देखने के लिए तो। ओ हो गया भाई, ओ हो गया। ओ भाई हो गया। अरे फास्ट, ये सॉल्यूशन फास्टेस्ट कैसे है? हाउ द हेल, ये सॉल्यूशन फास्टेस्ट कैसे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा बस। फास्टेस्ट सॉल्यूशन कैसे है ये? लिटरली ये सॉल्यूशन जो है ओ एन में हुआ है, 2 to the power 31। भाई क्या गधे हैं ये लोग, क्या गधे हैं ये लोग भाई। नम्स डॉट लेंथ इन्होंने 1000 दे रखी है, नम्स आई इन्होंने 2 to the power 31 दे रखा है। पागल लोग भाई, पागल लोग। अबे क्या है ये, इसके लिए इतना क्या यार। हो गई भाई, ये सीरीज का एंड हो गया इसी के साथ। मुझे मार्च वाला बैच मिला है, मार्च वाला बैच मिल गया हो काश। एक बैच होता है मार्च वाला, पूरा मार्च मैंने किया, तो मुझे एक वो मार्च वाला बैच मिलना चाहिए। लॉक्ड क्यों है ये बैच? दो मुझे बैच चाहिए, मुझे बैच दो भाई। ख़त्म हो गया भाई। डायनामिक प्रोग्रामिंग के मैंने 2 क्वेश्चन किए हैं। मैं भी तो देखूं कौन से 2 कर दिए मैंने डायनामिक प्रोग्रामिंग के। एक कर दिया बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स, दूसरा अभी भी वाला जो है वो किया है, पता नहीं यार। डिवाइड एंड कॉन्कर के 2, मोनोटोनिक स्टैक के 2, हैश टेबल बाइनरी सर्च मैथ 2 पॉइंटर्स, पता नहीं सबसे ज़्यादा 2 पॉइंटर्स ही किया मैंने मेरे ख्याल से। और लिंक लिस्ट भी बहुत किया। क्यूज़ का एक कर दिया, पता नहीं ये क्यूज़ का कब कर रहा है मैंने क्वेश्चन। पहले एक्सेप्टेंस वाला ही होगा कोई। हाई एक्सेप्टेंस में व्हाट यार, फाइंड यूनिक कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। हो गया यार, हो गया। अरे कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है यार, ले लेते हैं। कहाँ गया रिवॉर्ड, दो मुझे। भाई कितनी देर से ऑडियो जा रखी है? वो है ना, 1 घंटे से ऊपर हो जाए ना तो ये ऑडियो चली जाती है, इसका सीन है थोड़ा। कितनी कितनी देर से जा रखी है? हाँ मैं कह रहा था ना, 15वां दिन, 15वां दिन नहीं है उसमें। कैसे नहीं है? अभी देखता हूँ, ये तो रहा 15th। करी तो है मैंने स्ट्रीम, रुको इसको डालता हूँ प्लेलिस्ट में अभी। सेव टू प्लेलिस्ट, एक ही कोड अलॉट, सेव टू प्लेलिस्ट।
लाइव स्ट्रीम्स कितनी देर पहले गई थी आवाज, मैं भी देखूं एक बार। अच्छा एक्स्ट्रा भी थोड़ी देर पहले गई। प्ले पॉकीमॉन। अरे यार पर मैं डिस्क्रीट के सिटी की तैयारी नहीं कर पाऊंगा ना, फिर प्रॉब्लम ये है, मुझे खेलने का मन तो है पॉकीमॉन। हे भगवान, मेरे सामने कुछ चिपका हुआ है, वो तो मुझे कभी नहीं खेलने देगा पॉकीमॉन। मैं ज्यादा बता नहीं सकता, पर मेरे सामने कुछ चिपका हुआ है। एक चिपके जाने दो। 14-15 ठीक है भाई। आई गेस दिस इज इट फॉर द स्ट्रीम, और दिस इज इट फॉर द सीरीज। एक एक कोड अलॉट, जस्ट वन मोर जो सीरीज थी अब इसी के साथ खत्म होती है वो। अब मैं स्ट्रीम नहीं किया करूंगा, लीड कोड करूंगा, स्ट्रीम नहीं करूंगा। एंड सिम भी आ रहे हैं। आई गेस दिस इज टाइम टू से बाय बाय टू दिस सीरीज। AK signing off, day in day out, worked, and here it is 62 questions, 20 मीडियम भी है उसमें। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय बाय।